Hey guys, welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Today we're going to be watching CARRYMINATI'S real life story, the Ranveer show, BeerBiceps. But before we do actually, guys, it would be lovely if you could support us by subscribing to our channel. We have two now. One is Magic Flicks, and obviously which you're on at the moment, and the other one is Magic Flicks TV. It's something new we've started where we'll be vlogging all sorts of different things, and also we have Twitter and Instagram. It'd be lovely if you could support us on there too. Well, okay, let's watch this. Let's watch this. अपनी कोई भी तुम कुछ भी बना रहे हो उसको अपना 110% दो. अच्छी जाती नहीं जाती वो अलग बात है, लेकिन तुम अपनी तो एफर्ट्स दो ताकि तुम बाद में ये ना सोचो यार कि काश इसके अंदर मैं ये कर देता. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार जो भी रिस्पॉन्स आया मैंने अपना पूरा दे दिया था. बाकी यार अब नहीं चला तो नहीं चला, आगे बढ़ो. हैपेंस. टीनेज प्लस अगर तुम फेमस हो तो बहुत एक तुम्हारी लाइफ पे टोल देता है. अब मेरे साथ क्या है कि मेरे को जो बहुत बेसिक चीज़ है ना वो नहीं आती. फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव बिकॉज मेरे को भी टाइम नहीं है. Do you feel like you missed out on something? Yes, obviously. Namaste dosto, hello everyone. Today is a very fun interview. I've got my brother from the world of YouTube, Ajay Nagar भाई. क्या हाल है? लोग इनको कैरी मिनाटी के नाम से जानते हैं, पर पहले तो मेरे को ये कहना है कि कैरी मिनाटी और अजय नगर दो अलग इंसान हैं according to me. I know him as a friend, a brother. And ये इंटरव्यू में ना मुझे अजय नगर भाई को बाहर लाना है. So let's talk. Bhai, my first question to you is, people know you as CARRYMINATI. Yes. I'm proud to say कि I know you as Ajay. Lot of people don't know Ajay, I feel. हाँ, वो ऐसा है. वो ऐसा है क्योंकि बिकॉज मैं पर्सनली बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ. लेकिन जो कैरीमिनाटी जो मेरा कैरेक्टर है उसको मैं बहुत खोल के रखता हूँ कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये जो भी है सब कुछ मैं खोल के रखता हूँ. लेकिन अजय आई थिंक वो मेरे पर्सनली रहता है. मैं कर ही नहीं पाता वो चीज़ें शेयर बिकॉज आई डोंट थिंक मेरे को करनी चाहिए. ऐसा नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता, बट इट्स लाइक कुछ पार्ट्स हैं उसके जो मैं करना नहीं चाहता. तो उसकी वजह से मैंने वो पूरा प्राइवेट रखा है बिकॉज अगर मैं एक चीज़ करूँगा तो मेरे को दूसरी करनी पड़ेगी. सो इट्स लाइक दैट. ब्रो मेरे को एक क्वेश्चन पूछनी है कि अजय नगर ने, आपकी एज अभी क्या है? 19? मेरी 19 है. तो ऑलरेडी इतना अकॉम्प्लिश कर लिया आपने. अरे ऐसे मत बोलो यार, शर्म आती है. असली बात है, असली बात यार. नहीं, फॉरगेट कैरीमिनाटी. अजय नगर ने एज अ गाय उसने बहुत अकॉम्प्लिश किया है इतनी कम उम्र में. चलो आप कह रहे हो तो हम मान लेते हैं. सही बात है. अभी आगे के गोल्स क्या है? मेरे आगे के गोल्स बेसिकली मेरे को आई थिंक मेरे को यही कंटिन्यू करना है. मेरा बेसिक एम है कि इसको मैं और कराऊँ. यूट्यूब बहुत पोटेंशियल है, अभी भी बहुत पोटेंशियल है. अभी भी मेरे को ऐसा लगता है हर साल ना मैं कुछ ना कुछ डिस्कवर करता हूँ अपने अंदर. ब्रो पर मतलब एट द एज ऑफ 30 वेयर डू यू सी योरसेल्फ? कभी एट द एज ऑफ 30 आई हैव नेवर, मैंने कभी नहीं सोचा इतना दूर का. मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं आज क्या करूँगा, कि आज है ना, आज मेरे को आपसे मिलना है, मैं ये करूँगा. ठीक है, मैं कभी ये नहीं सोचता मेरे को कल क्या करना है. मैं ऑब्वियसली जब कंटेंट बनाता हूँ मैं सोचता हूँ इसका फ्यूचर क्या है. तो कहने से कि योर गोल इज टू जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम. या फॉर राइट नाउ यस, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. ब्रो पर इतना बड़ा बिजनेस एक्चुअली खड़ा किया है. कैरीमिनाटी इज अ बिजनेस एट द एंड. तो ये पूरे एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा लर्निंग क्या है? इसका सबसे बड़ा लर्निंग है कि तुम हमेशा लर्न करना चाहिए हर चीज़. और मैं बिलीव करता हूँ कि तुम जितना एक्सपीरियंस लोगे ना अपनी लाइफ में उतना बेटर है. बिकॉज जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना कोई चीज़, एक होती है एजुकेशन. फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एजुकेशन सिस्टम जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्जरी ये सब हो सब ठीक है. अब ये चीज़ें तुम ऑब्वियसली यूट्यूब से नहीं सीख सकते है ना. यू कांट बी अ सर्जन जस्ट बाय वॉचिंग क्या कहते हैं तुम्हारे सर्जन यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, राइट. तो वो नहीं कर सकते तुम. बट फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, डांसिंग, गिटार, इंस्ट्रूमेंट, कोई भी क्रिएटिव चीज़ होती है ना, वो आई थिंक बेस्ट तभी निकल पाएगी जब तुम अपना उसको अपनी तरीके से एक्सपीरियंस करोगे अपने स्टाइल से. कोई क्लास में जा रहे हो, तुम डांसिंग क्लास जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो एक स्टाइल है. उनका अपना एक स्टाइल है जो टीच कर रहा है तुम्हें. उनका एक अपना स्टाइल है, वो वही सिखाएंगे जो उन्होंने सीखा है. व्हाई नॉट अपने तरीके से सीखो तुम. एक स्टेप तुम्हें लगेगी भी, फट के आएंगी बहुत सारी, मतलब लगेगी तुम्हारी अच्छे से, ऐसी बात नहीं है, लगेगी. लेकिन एट द एंड तुम्हारा कुछ अपना निकल के आएगा जो बाकी सबसे अलग होगा. इसीलिए एंड ब्रो ये पूरे एक्सपीरियंस का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है? यार बेस्ट एक्सपीरियंस मैं बताऊं, मैं रोज अपना बेस्ट एक्सपीरियंस जीता हूँ. मेरे को जो करना है ना मैं वो करता हूँ. बिकॉज मेरे पेरेंट्स की तरफ से मैं 19 स्टिल अ किड, राइट. तो कोई प्रेशर ही नहीं है.
मैं जब चाहे वहाँ जा सकता हूँ, मैं अभी बुक कर लेता हूँ, मैं फ्लाइट कर लेता हूँ, मैं अभी फ्लाइट बुक कर लेता हूँ, मे बी आई वॉन्ट टू गो टू दुबई, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, मैं नहीं जाऊँगा दुबई, मेरे को ये अमीर लोकेशन इतनी पसंद नहीं आती सही में, ऑनेस्टली आई एम अ वेरी सिंपल गाय। तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गो, चाहे मैं अकेला भी जा रहा हूँ तो मेरे को कोई रोकने वाला नहीं, आई हैव माई फुल इंडिपेंडेंस, और वो मेरे लिए बेस्ट चीज़ है। ब्रो बहुत लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं कि यू आर अ वेरी प्राइवेट पर्सन, यू लाइक स्टेइंग विद इन योर हाउस एंड ऑल दैट। उसकी कोई वजह है? उसकी वजह नहीं है, आई जस्ट कि मैं बचपन से ना मैं ऐसा था कि यार दोस्त बोलते थे यार चल बाहर चल रहे हैं, नहीं यार घर पे बैठते ना कुछ खेलते वेलते हैं क्या करते हैं, मैं वेरी मतलब इंट्रोवर्ट में था ही, इंट्रोवर्सी पर्सन। हाँ बहुत ही, मैं अंदर ही रहता हूँ, ये जो मेरी ये है ना ये है मेरा जो कमरा है वो मेरी दुनिया है, मैं आता हूँ जगता हूँ, मैं वहाँ बैठता हूँ, मैं काम करता हूँ, वरना गेम खेलता हूँ, वरना मैं चिल मारता हूँ, और ये मेरी स्पेस है। और वो स्पेस से ही एक बड़ा सा बिजनेस भी खड़ा कर दिया है। हाँ वो साथ साथ में हो गया तो वो बहुत ही अच्छी बात है। खैर वो तो जब बन रहा था साथ में तो वो प्राइवेट स्पेस अपनी क्रिएट हो रही थी मेरे को, क्योंकि प्राइवेसी मेरे को बहुत पसंद है, मैं नहीं चाहता कि ऑब्वियसली जब मुझे लोग मिलते हैं मेरे को बहुत मजा आता है, लेकिन अनवांटेड किसी को भी नहीं चाहिए, राइट? कि कभी कभी क्या होता है, जैसे अब मैं फॉर एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, मतलब मूवी भी देखने आया तो फिर लोग कभी कभी आ जाते हैं, अब वो उनके सामने वो भाषा बोल रहे हैं जो मैं वीडियोस में बोलता हूँ, ओके सो यू डोंट वांट दैट, ठीक है, एट द एंड माँ बाप तो माँ बाप होते हैं यार, है ना, उनके सामने थोड़ा ना बोल सकते हो चीज़ें, तो है ना, वीडियो अलग बात है बट उनके सामने नहीं। ब्रो तो अभी ये क्वेश्चन है कि अजय नगर ने ऐसी क्या चीज़ की है जिसकी वजह से कैरी मिनाटी की ग्रोथ इतनी हो गई है, कि बहुत सारे लोग ये ऐसे ही चैनल्स ग्रो करना चाहते हैं, बट अजय नगर ने मेरे ख्याल से कुछ अलग किया है, तो वो क्या चीज़ है? आई थिंक अगर यूट्यूब पे तुम्हें टिकना है, एक चीज़ होती है ग्रोथ वर्सेस एक होती है स्टेबिलिटी, तुम्हें चाहिए स्टेबिलिटी। अगर मेरे को मैं बोलूँ कि मेरे को 50 मिलियन दे दो सब्सक्राइबर्स 2 महीने के अंदर, उसके बाद मेरा चैनल बंद कर दो, वर्सेस मेरे को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स दो, ठीक है, एक साल में हर 5, तो तुम क्या प्रेफर करोगे? स्टेबिलिटी, यू नीड स्टेबिलिटी, राइट? तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए तो तुम्हें इवॉल्व करते रहना चाहिए हमेशा, चप कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स करो, ट्राई नए नए, बहुत लोग डरते हैं बिकॉज फेल होते हैं एक्सपेरिमेंट, मेरे भी बहुत हुए हैं, मेन अपना जो थिंग है उसे पकड़ो लेकिन इवॉल्व भी करते रहो। ब्रो व्हाट इज द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग अ फेमस टीनेजर इन इंडिया? डिफिकल्ट? हाँ, मुश्किल क्या है? सब कुछ ही मुश्किल है। क्यों पर मतलब? बिकॉज पहली बात है तुम टीनेजर हो तो तुम बेवकूफ़ी करोगे ठीक है, अब ऑब्वियसली जो टीनेजर्स होते हैं वो, मतलब मैं बेवकूफ़ नहीं कहूँगा लेकिन ऑब्वियसली दे इंजॉय करना ज़्यादा पसंद है उन्हें, मतलब पार्टीज़ वगैरह, मैं पार्टी इतनी करता नहीं, लेकिन जो मेरी इंजॉयमेंट है, मेरा जो पागलपन है एज अ टीनेजर, तुम्हारा जो दिमाग है वो कहता है यार ये चीज़ करो, ये चीज़ करो। कभी कभी मैं इवेंट पे होता हूँ, मेरा मन करता है अरे भाई ये इसने ये क्वेश्चन पूछा, इसके तो बहुत सही आंसर दे सकता है तू, लेकिन फिर मैं देखता हूँ मैनेजर साइड में खड़े हो कह रहा मैंने कहा अच्छा नहीं इट्स ओके, फिर नॉर्मल आंसर ठीक है। टीनेज प्लस अगर तुम फेमस हो तो बहुत एक तुम्हारी लाइफ पे टोल लेता है। अब मेरे साथ क्या है कि मेरे को जो बहुत बेसिक चीज़ है ना वो नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव बिकॉज मेरे को भी टाइम ही नहीं मिला, मैंने कभी कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस नहीं बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं, राइट? तो जो बेसिक एक वो चलता है ना तुम्हारा पेस, पहले कि तुम चलना सीखो, ठीक है, ये सब करो, फिर उसका स्कूल जाओ, फिर तुम कॉलेज जाओ, फिर तुम जॉब करो, ये नॉर्मल जो साइकिल है वो मेरी बीच में ब्रेक हो गई। डू यू फील लाइक यू मिस्ड आउट ऑन समथिंग? यस ऑब्वियसली। तो कभी वो फीलिंग आती है कि यार शिट व्हाट वुड हैव लाइफ बीन लाइक? हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार हॉस्टल में ऐसे पीजी या फिर ऐसे में फ्लैट शेयरिंग करके एक बार रह के देखूँ कैसा लगता है, फिर उनका जो पूरा एक्सपीरियंस है कॉलेज में क्या बकचोदी होती है अलग अलग, वो मैं चाहता हूँ एक्सपीरियंस करूँ, और मैं एज अ क्रिएटर ही चाहता हूँ ताकि मैं उसके ऊपर कंटेंट बना सकूँ क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है बेचार कॉलेज वालों को देने के लिए, मेरे पास एज अ रिलेटिबिलिटी मेरे पास कुछ भी नहीं है उनको देने के लिए, क्योंकि मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है, तो मैं उनको कैसे दूँगा कंटेंट? मेरे को लिटरली भगवान की दुआ से कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं, जीरो। जो मेरे को चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, मतलब लिटरली जो आप सोच सकते हो ना कि यार मेरे को सपना भी देखते हो ना कि यार मैं ना ये करूँगा, वो मैं कर चुका हूँ तो मेरे काइंड ऑफ ड्रीम्स ना खत्म हो रहे हैं तो वो एक सीन है। बट हाउ डज दैट फील कि इतनी छोटी उम्र में ड्रीम्स खत्म हो रहे हैं? तो कैसी फीलिंग आती है? सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है? देखो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ एक्चुअली, मैं अपने आप से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं लोगों से बहुत सेटिस्फाइड हूँ जो काम कर रहे हैं हमारे, मैं सबसे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें आ जाती है, लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है कि यार
मेरे को अब 3 साल हो गए हैं वीडियोस बनाते हुए, क्या मुझे हर बार हर वीडियो में प्रूव करना पड़ेगा कि यार हाँ मैं कोई चीज़ हूँ, कि मैं अच्छी वीडियोस बना सकता हूँ? क्या मेरे को हर वीडियो में प्रूव करना पड़ेगा? वो एक फीलिंग आती है मेरे को, और मेरे को लगता है हाँ क्यों नहीं, एंड तक करना चाहिए प्रूव। अपनी कोई भी तुम कुछ भी बना रहे हो उसको अपना 110% दो। अच्छी जाती नहीं जाती वो अलग बात है, लेकिन तुम अपनी तो एफर्ट्स दो, ताकि तुम बाद में ये ना सोचो यार कि काश इसके अंदर मैं ये कर देता। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार जो भी रिस्पॉन्स आया मैंने अपना पूरा दे दिया था, बाकी यार अब नहीं चला तो नहीं चला, आगे बढ़ो, हैपेंस। तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं कैरी मिनाटी के बारे में? मेरे पेरेंट्स एक्चुअली वैसे तो पर्सनली ऐसे कुछ कहा नहीं है उन्होंने, बट व्हाट आई फील इज कि वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस चीज़ को, बिकॉज उनके लिए भी नया है। बच्चे आ रहे हैं, फिर फोन करके पूछ रहे हैं कॉलीग्स वगैरह कि यार बच्चे मिलवा दो हमारे। ऐसे अलग अलग, तो उनके लिए भी वो एक्सपीरियंस है, मेरे लिए भी वो एक्सपीरियंस है, हम साथ में सीख रहे हैं कि इसको कैसे डील करना है बेसिकली। बट कभी कुछ कहा है अबाउट लाइक गालीज और हाँ, एनीथिंग लाइक वो बीच बीच में चलते रहते, मम्मी की तू क्या करता है, सुन एक काम किया अगर माँ या बहन की नहीं देनी, ठीक है, बाकी तू तेरे को देनी है दे ले तू, लेकिन ये नहीं बोलना। फिर जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ हमेशा सोचता है यार मम्मी देख रही होगी, नहीं। फिर लेकिन ऑब्वियसली यार मैं तब खुला होता हूँ इतना कि कोई सीन ऐसा आ जाता है, जैसे अगर कोई हॉरर गेम खेल रहा हूँ एकदम से आ गया मुंह पे मेरे, निकल जाता है। क्या करें। कभी ऐसे प्रेशर फील होता है कि यार इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी बड़ी फॉलोइंग बन गई है, कभी यू फील द प्रेशर? मैं ऐसे कभी नहीं सोचता, बिकॉज आई थिंक मेरे माइंड में मैंने कभी भी 6 मिलियन लोगों को एक साथ नहीं देखा, तो मेरे को नहीं पता वो कैसा लगता है, राइट। मैंने नंबर देखा है, नंबर बहुत लोग देखते हैं, नंबर मैंने 12 बिलियन भी देखा है ना, लेकिन मेरे को ये फील नहीं होता कि 12 बिलियन है ना। तो मेरे ख्याल से अभी मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है फिलहाल के लिए, और मैं प्रेशर लेता नहीं। अगर मैंने ये देखा है जब मैं प्रेशर लेता हूँ तो चीज़ें गलत जाती हैं। भाई अजय, सो आई वांट टू एंड द इंटरव्यू विद वन लास्ट एडवाइस फॉर एनीवन, कोई भी शॉर्ट एडवाइस, सब कोई भी शॉर्ट एडवाइस। तो मेरे हिसाब से देखो यार, मैंने पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ ये बात में इंटरव्यू में, लेकिन प्लीज़ चीज़ें ना एक्सपीरियंस करो। जितना तुम एक्सपीरियंस करोगे ना तुम उतना ग्रो करोगे, चाहे तुम्हारी कोई भी फील्ड हो, लिटरली कोई भी फील्ड हो, बस एक्सपीरियंस करो यार चीज़ें। कभी भी किसी चीज़ के लिए ऐसे ना मत बोलो कि यार ये चीज़ मुझे नहीं करनी, ये नहीं कर रही। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। अगर वो चीज़ बुरी भी जाती है ना तो यार तुम 10-5 साल बाद उसको याद करोगे यार, हंसोगे यार, कितने मज़े आएंगे। मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि अगर कोई भी मेरे साथ अगर कोई इंसिडेंट पहले हुआ जिसके अंदर मैं बहुत ही बेवकूफ़ लग रहा हूँ, तो मैं अब सोचता हूँ अरे यार क्या दिन थे वो, उसमें बड़े मज़े आते हैं। तो वो चीज़ एक्सपीरियंस करो यार, क्या पता कुछ कुछ बाहर आ जाए ऐसा जो तुम्हारी लाइफ ही बदल देगा। ठीक है, सो दैट वाज द इंटरव्यू विद माय ब्रदर अजय। भाई थैंक यू यार, मज़ा आया इंटरव्यू में, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। ब्यूटीफुल। तो ऑब्वियसली अजय के सारे हैंडल्स और यूट्यूब चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। सब्सक्राइब प्लीज, सब्सक्राइब कैरी मिनाटी, सब्सक्राइब टू BeerBiceps। थैंक यू भाई। खैर आपके चैनल पे जा रही है तो बोलने का पॉइंट नहीं है। करेंगे सब्सक्राइब। ये बटन क्लिक कर दीजिए, वो भी बटन क्लिक कर दीजिए। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम अजय भाई एंड रणवीर भाई, we'll see you later. What do you think of the video? I thought it was quite, it shows a different whole take on him. Completely. I think I like him even more than I have from the last few videos. The Yeah. last video we watched. It's so If nice. you guys see, the first video that we ever watched of his was the gaming video, Rest in Peace Monitor. I know loads of people took exception to it, and I think I mentioned it before. When people obviously request us to watch videos, everyone knows we don't research on stuff, because just like a child finding something new, if you already know what you're going to expect, you can't have your natural feelings and reactions come out. So if people research and say, oh god, this is going to be a new action comedy film, you know it's a comedy film, the trailer's going to be funny. So your mind is already automatically gone, this is what I'm expecting. So when people sort of suggested watch CARRYMINATI, I didn't know nothing about him, to be honest. We're from UK, Britain, everyone's got different things that they watch and stuff like that. Majority of the stuff we get introduced to new stuff by you guys. Anyway, lots of people gave us the link, Rest in Peace Monitor, Rest in Peace Monitor. Didn't know he had 2 channels, didn't know nothing about it. Watched it, and just like what he's basically saying here,
there's that respect for his parents. There's one thing that he does as a character, the person he is, and then the person who, you know, in front of his mum and dad, he can't have people approach him and saying those things, talking the way he does in front of them. They're still mum and dad Makes kind me of thing. feel a bit better now, because the way I was in his first video, when Yeah. I watched his first video, But I was that's I was what like his mom, so obviously So his mom it's feels the same way. and so his mum, he's even identified that his mum would say, yeah, you want to swear and stuff like that, but you don't say Mandy or Ben. But what we were saying is, we're not in our 20s. We've got 4 kids. We do a video not expecting anything, but we do have them sometimes loitering around, and one of them is only 8 years old. So obviously, if you can imagine, something comes up and we're, you know, and we're taken aback because we didn't know what it was. And if you see that video, he doesn't say anything besides, yeah, we can understand the frustration, don't get me wrong, you know, gaming, yes, we're not that old that we don't understand gaming can be frustrating, yes, understand the frustration. But it was just like this way, and we're like, oh my god, you know, what are we watching here? You know, this is not what we you know, why did people want us to watch this? That was our first take. Not come across this person and all it was Mandy, Ben, this, that and the other, and that was it. And you know what, anyone else would be like, if you guys had, I'm sure the people that watch his videos, the gaming ones, they don't go and sit with their mum and dad and stuff like that. And people like, obviously not, but Steve probably would have enjoyed it by himself or whatever. But we always do reaction videos together, so the people who ask for us to watch it know that I'm watching it with my wife, or I'm watching it and we do say that the kids are around, and it's basically that's what we said. And there's no issue with swearing and stuff like that, but we said it's in the context. Like now, if he's making a video and he's doing some swear word, or Ashish Chanjalani does it, or someone else does it, or it's in a Sacred Games or a Pdalok or whatever, you know, the context is there. And when he's doing a roast, that is there, you know, you can understand it, but it wasn't that. And that's why we said that the gaming thing is probably not our thing, in the only sense we have got people around the house, but that was it basically. But otherwise, to be honest, he seems quite understanding though. His parents, he knows how they feel about it. He seems so mature for his age, and that's what we're trying to say basically. He's coming across like loads of people wrote in that comment, oh well, he would probably write. No, he wouldn't, because you can see he roasts people. That's his character that he plays, and then he doesn't try to put people down on purpose, as in he isn't a bad guy, and you can just see from him, he's very mature, he's very sensible. He doesn't want to disrespect his parents, he doesn't want to disrespect anyone else's, and it's this whole thing, you know, who I am and who I have to be are 2 total different things. And then you know that I know for a fact that if there was an opportunity came that I had to sit and have a conversation with him, God, guess what? Your first video we saw, this is how we felt. Carry इदा सानू लगा सीगा ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, you know, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰੋਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇਦਾਂ he's gonna laugh, he's gonna understand. You know straight away, he's gonna say, yeah, you know what, that's how my parents saw my video first time just like that, and they're like going, tu ki karta, you know what I mean? Which was quite shocking for everyone else, and the way they responded. So he's very mature for his age, very switched on, very smart in the sense of what he does. And you know, he's really good. I mean, the reason why I want to watch this, because I used to watch BeerBiceps channel before we started doing YouTube. I used to look at his fitness stuff and all that, and he obviously started BeerBiceps speaking in English, and I thought he was quite good, so I did know about him anyway. And obviously now I've actually seen Carrie's, not the videos that we haven't seen, but Carrie's videos that we already have seen. I've rewatched them because you could just see how he is, and you know, and people are like, well, you can't like him now, you didn't like his first video. You're like going, well, come on, you know what, people can watch a TV series and watch the first episode and not like it, and watch the second episode and go, oh god, this show is amazing. It just shows their maturity. He's very switched on, and I'm glad that, you know what, he's nothing compared to the person, well, yeah, that many other people like, you know, portray him to be, sort of thing. No. He's not a bad guy or anything. He seems very good. I really, like, after watching that, I mean, I liked him anyway after the even more, this is the real him. And to be honest, I could relate in that sense. Not only, people, I ain't got 20 million subscribers and all that, not that kind of thing. I'm an introvert as well, so I'm very much keep to myself. I don't normally open up and talk or anything or go out as much.
Street's a bit the opposite. She's very much extrovert and wants to go out and do stuff. Yeah. Whereas me, I like to be, it's like more or less, I'll talk when I'm comfortable, but otherwise it's just, and I never really understood that before. It's just like, just not so, know that. and for him to understand that. because I used to prefer to like just be in my room and do my own things, and people just go, well, what's wrong? And because he was like, that when you're an introvert, you just this is my world where I can now. It's just like feels like I'm talking, but and also he's saying if he has to speak about stuff, open up to people, then it goes further than just that one thing. People want to know more. It goes, and he's not sure whether he wants. And I was going to say, and that's why Sri, I don't know about her, but, if she will, but I'm fairly private. When people are asking, you see that I tend to talk about videos and movies. I mention little bits here and there, what we're doing and stuff like that. But in the whole gist of everything else, I am very private, like from the job that I do. You guys ask me all the time. I do have another job, but I never say what it is. And that's where it goes with anything to do with what I get up to and just little stuff bits like that. Instagram, like we were saying, if me talking about that, it's then talking about, it's not just like everything else behind it as well. So, it's quite deep, isn't it? And he already knows beforehand. That's a subject that I don't want to talk about because I know then there's going to be more further questions. Yeah. I'm watching it and I'm like, this boy's like for 19 years old. I think about 20. I think it was probably made it regardless, last year, then he was about 17 when he started it up. Probably about 16, 17. So that's just absolutely amazing. Fantastic. I would like to ask, would have liked, if I was him, the other guy interviewing him, I would have asked many more questions. It really, like, curiosity of wanting to know, okay, first of all, has he always been like this? I'll be like asking the parents, has he always been like a character? He's got a funny side of him as he was growing up, so you know where it all started from. Like things like, how was he at school? Is that something he just didn't want to do and he knew he had more to offer? Like, you know what I mean? And where did it start? Where did they start from? That would inspire other people who want to do it. That, he always knew he didn't want to do that and he wanted to do that, and he always had that kind of thing where he was, what pushed him to do this, and also the CARRYMINATI. Where did that name come from? There's so many things I like, you know what I mean? I mean, the viewers probably know where the name come from, but we don't know where the name come from. Obviously, his name's Ajay. Yeah, but he seems like such a lovely switched on guy. But like I said, there's two characters. There's Ajay, who he is, and the person that... and I said that in that other video when he saw Tom Cruise, you could see, when he was interviewing, he was a total different person. Yeah. That was, you could see, that was Ajay. Yeah. He was doing that interview and doing all that. And then you see Carrie's a total different person, but you can see he is two different, Because there are many people at his age, 19, are quite lost in life and they don't know what to do, or, Hey, don't get us wrong, there's people in their 40s and 50s who are lost in life, you know what I mean? Exactly, and then you've got someone like him who's been in his room, he knows what he wants. Like you said, there's many things he hasn't done. But you said the stability is just about the experience, and that's one thing is, I guess in that sense, I'm sort of grateful that, maybe that's why I've sort of started the channel now. I mean, not that I knew so much about YouTube before that, besides watching it kind of thing. But it's the experience. I can always look back at all the stuff that I've seen, dealt with, or know. I don't think many people in the world have done the stuff that I've done, kind of thing. And so it's that it was meant to be. And maybe one day I will say what it is and what I've, but at the moment, obviously, I just can't. But that experience is something that will always live with me, kind of thing. Yeah, of course. So also, like with when he's talking about like come out of your comfort zone, doing stuff. I mean, just me doing the intro and like just talking about it, I find that so difficult. Although I hear Steve doing it all the time, he's always like, hey guys, it's so hard for me to do. I'm like, how many takes do we have to do? We have to do like 1,000 takes, so I understand what he's saying. But I'm more or less going, even though if like, oh God, we could have just got it done, right? I was like going, no, she needs to do this because she needs to get out of that comfort zone and get so comfortable with doing it. Then again, but people look at you and think, oh God, she's so like, she's quite, and I've got to go out and quite, I'm okay with new people. I'm quite, in that sense, I'm all right. But that confidence level of doing things that you've never done before, for me, it's like, oh my God. So I understand that with him, and for him to say at that age, I just feel like as well, I hope he inspires a lot of
He is, obviously he is. I mean, he's doing really well. I mean, you can see how we need upset he more. was when he done that other video as well. He didn't like. He was more or less. I know. He doesn't like put hate out there. He just does what he does, kind of thing. You know what I mean? And but I do. I have, and this isn't. Before people are, oh, guys, are only saying it for the views or this, that, and the other. You know what? It's nothing. You either like something or you don't. Would I watch his gaming videos? I haven't thought about it, to be honest, since that time. I just thought maybe it's just not for me, so there's no need, and I don't want to dislike something for the sake of it, because, you know, either you're interested or you're not. But his roasting ones that I have seen, or his interviews, and even watching him now, I'm a fan, you know what I mean? And now you get to know him even more. He is good, you know, and you got to give it due. But, you know, at the end of the day, you know, I would say don't have to watch mine. Watch his. I would watch his, even if you guys went. Even if I stopped YouTube tomorrow, I would watch his. I have subscribed to his thingy, and he's on notification. A video comes out of his. If I was doing this or not, I would watch it now because he is good. Sometimes you got to know these other sides of people. You know what I mean? Not just the characters that they portray, the videos that they make. That was good. It was, I like them both, to be honest. BeerBiceps I subscribed to ages ago. So Carry I subscribed after I watched his second video. But you know, it's good to see them both together, because I think they both here. I think Ranveer from BeerBiceps, I think his name, if I'm right, he's only about 26, 27, so he's quite young as well. He started his about 3 or 4 years ago, I think, and he's done really well as well. So but that was the video, guys. Tell us what you think. Please do click on the like button, share it with people you know, and don't forget to subscribe, and we'll see you on the next one. Take care. See you soon. Bye. Bye.